ਹੈਲੋ एवरीवन ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਨੈਕਸਟ 15th ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟਿੰਗ ਸਾਈਨ ਆਫ ਸਵੀਅਰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਐਂਡ ਹਾਈਪਰਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ what should the nurse instruct the patient to do? ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਸ਼ਨ A take shallow rapid breaths, option B hold each breath for 5 seconds, option C breathe into a paper bag, option D perform vigorous exercise। हाँ जी, the correct option की तरह हमें लगता है the right answer is C breathe into a paper bag। नाल नाल नोट करी चलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को है which of the following is the most appropriate action for a nurse when dealing with a patient who refuses a prescribed medication। फोर ऑप्शन अपने को ने ऑप्शन ए अपन कहंदी है इनफॉर्म द पेशेंट ऑफ द consequences of non compliance, ऑप्शन बी अपन कहंदी है एडमिनिस्टर द मेडिकेशन विदाउट द पेशेंट्स कंसेंट, ऑप्शन सी document the patient's refusal in their medical record, ऑप्शन डी dispose of the medication immediately। हाँ जी, द करेक्ट आंसर की है द राइट आंसर है सी document the patient's refusal in their medical record। ध्यान नाल सारे नोट कर लियो। क्वेश्चन 13th अपने को है the nurse observes that a patient's intravenous site is swollen, red and warm to touch, what is the most likely cause। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਲੇਬਾਈਟਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈਮਾਟੋਮਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ एन एलर्जिक रिएक्शन टू दी आईवी फ्लूइड। हाँ जी, द करेक्ट आंसर की है द राइट ऑप्शन है ए फ्लेबाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दे मूव करने आ व्हाट शुड अ नर्स प्रायोरिटाइज व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ फॉल्स। पहली ऑप्शन की गल करिए तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ फ्रीक्वेंट रिपोजिशनिंग इन बेड, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रेंट्स, ऑप्शन सी यूज ऑफ वॉकर और अदर असिस्टिव डिवाइस, ऑप्शन डी कॉन्टिन्यूअस आईवी सेडेशन। द राइट आंसर की है इन द राइट ऑप्शन है सी यूज ऑफ अ वॉकर और अदर असिस्टिव डिवाइस। नाल नाल तुसीं नोट डाउन करी चलियो। 15th क्वेश्चन अपन ने कहना पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर रिपोर्ट्स इंक्रीज्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, व्हाट शुड द नर्स असेस फर्स्ट। पहली ऑप्शन अपने को है वेट गेन ओवर द पास्ट फ्यू डेज, ऑप्शन बी यूरिन आउटपुट, ऑप्शन सी डाइटरी इनटेक, ऑप्शन डी रीसेंट फिजिकल एक्टिविटी। हाँ जी, द राइट ऑप्शन की है द करेक्ट आंसर है वेट गेन ओवर द पास्ट फ्यू डेज। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तुसीं ध्यान नाल कर लेने हैं ये। क्वेश्चन 16th अपने को है अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु इज अनकॉन्शियस, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। ऑप्शन ए अपने को है मेंटेन अ क्लियर एयरवे, ऑप्शन बी अपने को है चेक द पेशेंट्स रिफ्लेक्सेस, ऑप्शन सी keep the bed in the lowest position, option D administer stimulants to awaken the patient। हाँ जी, द करेक्ट आंसर की है द राइट आंसर है मेंटेन अ क्लियर एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करते हैं अ पेशेंट इज रिसीविंग enteral feedings through a nasogastric tube, what action must the nurse take before administering the feeding। पहली ऑप्शन अपने को है कन्फर्म द प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब, दूजी change the formula to enhance absorption, तीसरी ऑप्शन मिक्स द फॉर्मूला विद वाटर टू डिक्रीज विस्कोसिटी, चौथी ऑप्शन अपने को है पोजीशन द पेशेंट इन अ स्पाइन पोजीशन। द करेक्ट आंसर की है इन द राइट ऑप्शन है ए
confirm the placement of the tube. अगले क्वेश्चन पे जाने हैं. A nurse is preparing to administer a vaccine. What is the most important action to verify before administration? चार ऑप्शन ने अपने को. ऑप्शन पहली, the patient previous reaction to vaccines. B, the expiration date of the vaccine. Option C, the patient's insurance coverage. Option D, the need for a booster dose in the future. हाँ तो राइट आंसर क्या लगता है? राइट ऑप्शन है बी, एक्सपायरेशन डेट ऑफ वैक्सीन. ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ. क्वेश्चन 19th है अपने को, when assessing a patient with peripheral artery disease, what symptom is most significant? Okay, option A अपने को है swelling in lower extremities. Option B अपने को है hair loss on the lower legs. Option C अपने को है intermittent claudication. Option D अपने को है warmth in the affected limbs. The correct answer क्या है? The right option is C, intermittent claudication. अगले क्वेश्चन की गल करते हैं. A patient with bipolar disorder is experiencing a manic episode. What is the most appropriate initial intervention by the nurse? Okay, पहली ऑप्शन अपने को encourage participation in group activities to enhance social interaction. Option B अपने को limit stimulation in the patient's environment. Option C, provide a detailed explanation about the consequences of risky behaviors. Option D, increase surveillance to monitor for self harm. हाँ जी, the correct option की लगती थोनों? The right option है B, limit stimulation in the patient's environment. कोई ज्यादा टफ नहीं है, तुसी ध्यान नाल एक बार सारे देख लेने एग्जाम च जान तो पहला. क्वेश्चन 21 अपने को है, which technique is most appropriate for a nurse to use when performing a sterile dressing change? Option A, use clean gloves to remove the old dressing, then sterile gloves to apply the new dressing. Option B, use the same pair of sterile gloves to remove the old dressing and apply the new one on. Option C, use sterile gloves throughout the process and apply an antibiotic. Option D, remove the dressing without gloves due to the presence of body fluids. आज तो निकला करेक्ट आंसर की लगता है? The right answer है A, use clean gloves to remove the old dressing, then sterile gloves to apply the new dressing. Question next की गल करिए अपने को है, a nurse is caring for a patient who just underwent a total hip replacement. What is the priority nursing intervention to prevent post-operative complications? अपने को उन्होंने चार ऑप्शंस दिए ने. पहली ऑप्शन अपने को है encourage frequent change in position. Option B, ensure the patient remains on strict bed rest. Option C, apply a heating pad to the surgical site. Option D, initiate physical therapy on the day of the surgery. In the right answer की लगता है? The correct option है A, encourage frequent changes in position. Next question की गल करिए तो अपने को in preparing a patient for an elective surgical procedure, the nurse notes that the patient's consent form is not signed. What is the next appropriate action? ठीक है, अपने को चार ऑप्शन है. पहली ऑप्शन, proceed with preoperative preparations as the surgery is elective. Option B, notify the surgeon immediately to obtain patient consent. Option C, have a family member sign the consent form. Option D,
sign the consent form on behalf of the patient? हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆंसर ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? The correct option है B, notify the surgeon immediately to obtain patient consent. 24th क्वेश्चन की गल करिए तो अपने को when providing discharge instruction to a patient who had cataract surgery, what information should the nurse emphasize? ठीक है, अपने को चार ऑप्शन दिए उन्होंने। पहली ऑप्शन अपने को है द नीड टू अवॉइड बेंडिंग एट द वेस्ट। दूसरी ऑप्शन द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज सच एज जॉगिंग। तीसरी ऑप्शन अपने को है इंस्ट्रक्शन टू रिमूव द आई पैच डेली टू चेक हीलिंग। ऑप्शन डी अपने को है द सेफ्टी ऑफ ड्राइविंग इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी। हाँ जी, इनका करेक्ट आंसर की है? इनका सही आंसर है द नीड टू अवॉइड बेंडिंग एट द वेस्ट। कि आप आज लास्ट क्वेश्चन की गल करते हैं 25th। हाँ जी, ये अपन क्वेश्चन कहता है a nurse is caring for a patient with severe depression who barely speaks. What is the best approach for the nurse to establish communication? चार ऑप्शन अपने को ने। ऑप्शन ए, speak loudly and clearly to ensure the patient hear the question. Option B, ask open-ended question to encourage dialogue. Option C, frequently ask yes or no questions to simplify interaction. Option D, wait for patient to initiate any conversation. तो इनका करेक्ट आंसर क्या लगता है? इन द राइट आंसर है बी, ask open-ended question to encourage dialogue. थैंक यू। ये वीडियो अपने इत्थे खत्म होंदी आ। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी वीडियोस देखने लिए सानू सब्सक्राइब कर लो। वीडियो चंगी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करियो। ओके।